Hi, welcome to the next video on How Finance Works by Mihir Desai. In the name of this chapter is The Art and Science of Valuation. And in this chapter, we are going to learn how to value a company. What are the different methods of valuing a particular company and the advantages and disadvantages of such methods. So, first of all, let's get started with so here it says that the different instances in life when we come across situations where we need to value a particular asset, right? For example, when we are buying a stock, when we are acquiring a company, while buying a house, investing in education, we need to ascertain the future outcome or the future value of a company or the future value of the particular thing on which we are going to invest. Otherwise, we cannot correctly impose a value. For example, here it says in Facebook made 3 billion offer to purchase Snapchat in 2012. By 2016, Google had reportedly valued Snapchat at $30 billion. By mid-18, the equity markets were valuing Snapchat at $17 billion. Now, what made these differences, right? Here is few more examples. Okay, so all these instances come to a common conclusion that we need a method for deriving values of a particular business. Okay, and that is necessary. Now, there are two alternative valuation methods discussed in this chapter. We will go through them one by one. So first is multiples. Now, a multiple is a ratio that compares the value of an asset to an operating metric associated with that asset. Beyond that fundamental structure, there is no other rule of creating multiples, and therefore there are numerous variants. A common multiple used in valuations is the price to earning ratio, which divides a common company's stock price by its earning per share. Alternatively, it's the value of a company's equity divided by its net profit. That ratio, for example, might be 15 times. This means that you are willing to pay $15 for every dollar of earning that a company generates. This quick back of a napkin calculation is easily communicated and provides an easy method to compare companies. So here it says that multiples is a good method to value a company. Now, how do you actually calculate multiples? You calculate multiples by PE ratio, which basically states how many times of the present value you are willing to offer. Okay, here it says for an example that let's say the present value of a company is $1 and you are willing to pay it $15. That means you are willing to pay 15 times the company's current value. So this is how it works. Okay, and yeah, it actually works like that. A PE multiple of 15x might seem puzzling. Why would you be willing to pay $15 for $1 of earning? Okay, so what is PE ratio? PE ratio, if you recall correctly, it is price to earning, price of share by earning per share. And it is a metric which tells how, it is a metric for shareholders to assess how much uh, price they have to pay for earnings, right? How much price they have to pay for
for the earning that one share makes, right? So a P, okay, so in short, that 15x, like everything in finance, reflects expectation of the future. So you are not just paying $1 of earning, you are paying for a stream of future earnings that is expected to grow. Does this imply that all multiples should be the same within an industry? Because firms may grow earnings at very different rates, and because companies might be judged to have earnings that vary in quality, the price to earning ratio can vary across companies within an industry. Difference Differences in PE ratio should occasion a question: why would $1 of a company's earning be worth so much more than another? Is it that much better operationally, or is it overvalued? So this particular para just says one thing, and that is that the PE ratio, uh, okay, so in this particular para, it says that multiples is one method of valuation and it is equal to PE ratio. And here it is written that PE ratio is not equal for every company, not equal for every company. Okay. So as we saw in chapter 2, earning are a problematic measure and we can use other measures of cash. Earnings before interest and taxes, EBITDA, operating cash flow, or free cash flow to construct multiple as well. We saw in chapter 4 there is another important capital provider, a lender who provides debt. So the multiple should reflect the fact that companies can use that type of capital as well. These two lessons are reflected in the use of EV, enterprise value, to EBITDA multiples, where EV is the sum of the market value of the debt and equity or the value of the business. The EV out by EBITDA multiples help us compare companies of varying capital structure. Okay. So here it was saying that PE ratio is one measure of deriving at multiples, but the problem with PE ratio is that it varies for different companies. It is not the same. So another useful measure is to calculate the ratio called EV, which is enterprise value by EBITDA. Now, which is accurate to some extent, and it helps to compare industries across different, you know, it is used to compare companies across different industries. Okay. So how can you use multiples? Table 5.1 shows three major companies in the cosmetic industry and their enterprise value by EBITDA multiples at year-end 2016. Using this information, how would you value Procter and Gamble, a fourth company in the same industry that generated? Okay. So here you can see that multiples are being used of EV by EBITDA. So as you can see, A1 products have a EV by EBITDA or multiple of 8.91. Similarly, L'Oreal has the multiple of 17.42 and Shiseido has 11.2. What do you make of this exercise? It raises the following question: is Procter and Gamble only cosmetics company? Do all these companies serve the same geographic market and same customer segments? Do these companies distribute the enterprise value of like much of finance using multiple is a method that initially seems odd, but is understand. You may have used a multiple in other more important buying home. Okay. So here it says that this is an exercise where we use different companies. For example, Avon, L'Oreal, Shiseido. These are uh, companies of different industries. So here it tells us to assume the Procter and Gamble's EBITDA, EV by EBITDA ratio.
So Procter and Gamble trades at 13.9x EV by EBITDA multiple. So like much of finance using multiples, okay. So here it says that this multiple method of valuating a company is similar to assessing a home, okay. Assessing a home using its price per square foot measure. Okay, here a beautiful example is given that let's say we have a beach and here is one home, and let's say in the same locality here is another home. But let's say this home value is 100 rupees and this home value is 50 rupees, and these both have same area. Now that is 10 units. Now if you calculate, then per unit value of this property will be 10 rupees, but in this case it will be 5 rupees. Now you might wonder why such a huge discrepancy in valuating, but in the real scenario, you can see that this house is closer to the beach and have a direct view to the beach, but the beach view is blocked in the case of this particular house. So I hope you are able to understand the problem with this particular measure of multiples, that it tries to generalize all the companies across the different industries. Okay, this is one major problem with multiples. So here it also it tells the same thing. Okay, that it is easy to the pro or the advantage of using multiples is that it is easy to calculate. Okay, see, seemingly quick and straightforwarded. That is the key. Easy to calculate, quick and straightforwarded. But here it underlines a word that is seemingly. Now it seems quick and straightforward, but in the real scenario, it is not. I just described how it is disadvantageous. Okay, it is disadvantageous because uh, it ignores certain unique aspects of the industries. Okay, here it gives an example of eBay and Apple. It first of all, that if we were to value eBay and Apple, it will be measured in different parameters. eBay is a company that sells second-hand goods, but on the other hand, Apple sells its own manufactured goods. Okay, so the entire scenario will be different to value these two different companies. They operate in different, markets. Their customer base is different. Their revenue model is different. How can you generalize their revenue models, right? So that is the uh, disadvantage of using multiples as a measure of valuating a company. So these are the pros and cons of using multiples as a measure of valuation. Now let's look at another method, which is a problematic method, that is payback periods. So oftentimes when we make an investment, we assess the capacity of investment by uh, assessing how rapidly it can pay us back our investment. Okay, but that is a faulty measure. Why? Because it only focuses on how rapidly we will get back our investment and not how much value it generates. Okay, for example, look at this table where there are same investment done in two projects A and B. For example, let's say in year one I get back 5 lakh rupees. Okay, in year two I get back again 5 lakh rupees.
and year 3 I get 3 lakh rupees. Okay, so total in 3 years I get 13 lakh rupees, sorry, dollars. But in case of project B, in first year I get zero, in second year I get zero, but in third year I get 16.7 lakh. Okay, so of course the third project is more beneficial to me, but in case of, if we do the payback analysis, then we will find project A to be more viable than project B. So this is one problematic measure which is called payback period calculation, and it has the fault that here it is written. See, at this example illustrates the payback period has some significant problems. By comparing these flows over time in this way, the time value of money is ignored. The second and even worse problem is that answer to a payback period analysis is a simple number of years, but that's actually not what we are interested in. We are interested in creating value. The payback method could lead you to choose an investment because you get your money back faster, but it turn away from an investment that creates much more value. Okay. Now we come to another, faulty way, that is internal rate of return or IRR. Now, what is IRR? We have studied it in earlier chapters that it is a rate of return, or in simple words, a rate which discounts my future cash flows and brings it back to zero. Okay. Here it is written, in other words, IRR analysis captures the rate of return that will be experienced if the forecast is realized for a project. Okay. Why? What could possibly be wrong with that? Why not analyze investment just looking at the IRR? The idea of rate of return is very powerful and accounts for IRR's pervasiveness. Once you have an IRR, you can compare it to weighted average cost of capital or discount rate. That's a little bit like the value creation exercise from chapter 4. While this is an appealing way to think about the world, IRRs are problematic for two reasons. First, IRRs can give you the wrong answer because they are focused on returns and not value creation. You can compare two projects and the higher IRR might actually lead to less value creation. Again, you are interested in value creation, not in rate of return of maximization. Second, if cash flows are characterized by outflows, then the inflows and outflows again, and then inflows, as opposed to a simpler version of using just outflows and then inflows. IRRs can give you wrong answers. Moreover, IRRs incur this risk and don't actually save any effort. Calculated IRRs must be compared to a weighted average cost of capital using forecasted cash flows. So we need this information as we did to discounting in chapter 2. Okay, so the problem with IRR is that it is a rate, right, which basically discounts all the future cash flows and brings it back to zero. Now, first of all, it has to be assumed at a particular rate, right? If we, let's say, assume that I will be getting 100 rupees for the next 5 years, and in order to bring back to their present value, I discount them at the rate of 10%. Now, there is no guarantee that that 10% is the appropriate rate of return, right? Due to future, uncertainties, the internal rate of return might be proved wrong. In such cases, there will be huge discrepancy between my between my calculated net present value and the actual value, right? So this is one uh, drawback of internal rate of return. First is volatility. Second is that it again focuses on what you call um, return maximization.
Okay, so this is the case that return maximization focused approach is not a very good measure because uh, again our aim is to maximize value, not maximize return. Okay, because maximizing return might result in we might be actually on the losing side if we focus so much on the return maximization process. Because again, after calculating the net profit, net present value, it might be found that the one with more value is the better option for us, right? These are the two considerable these are the two considerable drawbacks for while using internal rate of return as a measure of valuation. Now we will study the appropriate measure, which is the discounted cash flows. तो हमने पढ़ा कि यार वैल्यूएशन करने के कुछ सही तरीके हैं, कुछ गलत तरीके हैं। अभी तक हमने मेनली गलत तरीकों को पढ़ा, अभी हम जो है सही तरीके पढ़ने जा रहे हैं। सो विच इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अब डिस्काउंटेड कैश फ्लो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, आई गेस, द आइडिया ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो। बट फॉर द सेक ऑफ रिवाइजिंग, इट इज बेसिकली द you know net present value which is obtained by discounting the all future cash flows at an appropriate rate of return plus the terminal value. Okay, so this is the new concept that is used in the discounted cash flows, and it is not used in the calculating net present value. Okay, so we will discuss exactly how to obtain the value of a particular company using discounted cash flow. So all through an exercise. So पहली बात तो फ्री कैश फ्लोज क्या होते हैं? So free cash flows is a part of discounting cash flows, and फ्री की फ्री कैश फ्लोज कैसे मेजर किया जाता है? Start with projected EBIT or earning before interest and taxes. Subtract taxes. Okay, so this is how free cash flow calculated. First EBIT को निकालो, that is earning before interest and taxes. टैक्स को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि वो अल्टीमेटली पे करना ही पड़ेगा। उसके बाद ऐड नॉन कैश एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, उसके साथ डेप्रिसिएशन को ऐड करो because they should have never been taken out, and accommodate the capital intensity of the business by penalizing it for investment in the working capital and fixed asset. Okay, इसके साथ वर्किंग कैपिटल को सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर आपका ईबीएट निकल आएगा, आई गेस। नहीं, आपका आपका ये आएगा फ्री कैश फ्लो। ओके, सो यहाँ पे एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सो हम एक सैंपल, क्या बोलते हैं उसको, सैंपल बिजनेस का जो है वैल्यूएशन करने वाले हैं। उसके लिए हम देखते हैं, इमेजिन दैट योर कंपनी इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन अ न्यू लैबोरेटरी। एक नए लैबोरेटरी की पे इन्वेस्ट करेगी हमारी कंपनी, और उसके लिए पहले साल में जो है $2.5 million का एक्सपेंस पड़ेगा। ईबिट पहले साल में जो आने वाला है एक्सपेक्टेड दैट इज $1 million। The EBIT of $1 million is expected to increase by 5% every year thereafter। ये जो $1 million का EBIT है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, वो हर साल 5% करके बढ़ने वाला है। और 5 साल के बाद कंपनी का जो ऑपरेशन है, मतलब लेबोरेटरी का जो ऑपरेशन है, वो बंद हो जाएगा एंड सोल्ड फॉर द सैल्वेज वैल्यू ऑफ 1 million, और एक $1 million पे बेच दिया जाएगा। During the life of the project, the assets will be depreciated and ongoing capital expenditure will be made to maintain the assets. The net effects will be $300,000 depreciation expense and $300,000 in capital expenditure for years 1 to 5 to maintain the equipment. So इसमें कुछ assets में depreciation लगने वाला है जो कि total $300,000 का पड़ेगा, और 300,000 additional dollars will be capex for years 1 to 5.
उसके बाद वो क्या कहा है कि वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट एंड इज एज्यूम्ड टू इक्वल 10% ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। सो वर्किंग कैपिटल भी जरूरत होगी और दैट विल बी 10% ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। मतलब अगर पहले ईयर में जब पहले साल में जब ईबिट 0 से $1 million को जाती है तो कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल होगा दैट विल बी $100,000। ठीक है। इन ईयर टू जैसे 1 million से 1.05 million को जाती है तो कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगा $5,000 से, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो उसके बाद कहा है कि कंपनीज टैक्स रेट इज 30% एंड देयर आर नो को टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस। उसके बाद ये जो फैक्ट्स हमने पढ़ा अभी तक, तो उसको सारे चीजों को मिला के यहाँ पे एक दिया हुआ है। देखिए कि हमने यहाँ पे फ्री कैश फ्लो मेजर किया। देखिए पहले ईबिट लिया ईयर 1 के लिए, सॉरी ईयर 0 के लिए पहले ईबिट लिया कि 0 है कुछ नहीं है। हमने ईयर 1 में सिर्फ $2,500 का इन्वेस्ट किया, कैपेक्स किया, और फ्री कैश फ्लो पहले साल का बना 2,500 के बाद ईयर 1 में हमें रेवेन्यू जनरेट किया ईबिट जो कि $100,000 का है, और उससे हमने टैक्सेस माइनस किया उसके साथ हमने, और फिर उसके बाद ईबीएट निकला, फिर उसके साथ हमने डेप्रिसिएशन को प्लस किया। तो बेसिकली जो मेथड उन्होंने बोला था उसी को हमने फॉलो किया, राइट। और हमने वी अराइव्ड एट 600, सॉरी आई थिंक ये पॉइंट नहीं होगा, ये गलत है। तो वी अराइव्ड एट $60,000, $60,000, and similarly in this second year we arrived at 730, you know, $730, $766.5, and so on and so forth. So we arrived at the free cash flows. Now step 2 is, okay, so step 1 was to arrive at the free cash flows. Step 2 is to apply the weighted average cost of capital. Now if you remember, weighted average cost of capital is basically a method using which we uh, assess the cost of capital by giving sufficient weight to the debt amount, proportion of debt and proportion of equity, right? So उसके लिए हमने यहाँ पे देखा कि optimal capital structure for such investment is 35% debt and 65% equity. Risk free rate of return is 4%. हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होते हैं और कैसे निकालते हैं, राइट। लेंडर हमसे 7% चार्ज 7% इंटरेस्ट जो है चार्ज करेगा, और मार्केट रिस्क प्रीमियम 6% है। सो हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट हम इन इंफॉर्मेशंस की मदद से निकाल लेंगे, एक्सेप्ट द बीटा। बीटा को निकालने के लिए, बीटा भी याद है आपको बताया था कि बीटा भी इज बेसिकली अ मेजर, जो बीटा इज बेसिकली अ काइंड ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस जो कि मेजर करता है कि आपका स्टॉक बाकी मार्केट के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म करेगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ द मार्केट इज गोइंग एट अ लो, then if your beta is high, then it will be a beta value of negative, right? Similarly, the opposite is also true. If market is going high and your stock is performing low, then it will be positive. Okay, so this is how we calculate the cost of capital. Okay, and then this step 3 is calculate terminal values. अब terminal values क्या होता है कि most companies and many investments are expected to continue indefinitely. ओके, सो टर्मिनल वैल्यूज क्या होता है कि कुछ कंपनी जो है एज्यूम करके रखती है कि हमारा जो ऑपरेशन है वो इनफाइनाइट टाइम के लिए चलने वाला है, बट दैट इज नॉट द केस। जनरली हम क्या करते हैं कि कोई ऑपरेशन या फिर वैल्यूएशन काउंट करने से पहले हमें कंपनी का एज्यूम्ड ऑपरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं कि सपोज ये कंपनी 5 साल तक अपना ऑपरेशन करेगी, है ना। जैसे कि हमने इस लेबोरेटरी के एग्जांपल में कहा कि 5 इयर्स तक ये जो है ऑपरेट करने वाली है। सो 5 इयर्स तक ऑपरेट करने के लिए हमने लेट्स से मोस्ट कंपनीज एंड मेनी इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू
continue indefinitely. In these situations, it's a typical to settle on a year when you expect the company's growth to stabilize, and then summarize the value of all future cash flows through a simple set of calculation. This is called terminal value. It summarizes the value of the investment at the end of the forecasted cash flows. सो 5 साल तक जो हमने एज्यूम किया है, इन 5 सालों तक का जो जितना भी कैश फ्लो है हम कैलकुलेट करेंगे, और उसका वो उसका नाम हम लोग देंगे टर्मिनल वैल्यू, राइट. There are two ways to get terminal value. The first is via multiples and the second value is via perpetuity formula. Okay. So आप perpetuity formula को देख सकते हैं, राइट. देखिए हमने यहाँ पे फ्री कैश फ्लो निकाला. फ्री कैश फ्लो हमने निकाला, उसके बाद हमने क्या किया कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला. तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने 8.61 निकाला, और डिस्काउंट फैक्टर भी वहां पे डाला, प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाला. ओके. और फाइनली नेट प्रेजेंट वैल्यू इज 1069. ओके. सो 1069 कैसे आया? नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है पूरे 5 सालों तक हमने, ये जो है ईयर 0 का प्रेजेंट वैल्यू था. बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू हमने 2500 अपने पॉकेट से बिताया. नेक्स्ट ईयर आया हमारे पॉकेट में इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, टोटल जो जितना भी सम होता है इसको इससे ऐड किया, और हमें बैलेंस बचा जो है, दैट इज बेसिकली आवर नेट प्रेजेंट वैल्यू. ठीक है. और हमने देखा कि यार परपेचुएटी फॉर्मूला जो है, दैट इज क्यों निकाला जाता है परपेचुइटी फॉर्मूला? इट इज बेसिकली अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग टर्मिनल वैल्यू, राइट. और कैसे किया जाता है? कैश फ्लो बाय डिस्काउंट रेट. ओके. सिमिलरली ये तो है रहा 1 साल के लिए, कि जितना भी इस साल के लिए मेरा कैश फ्लो आने वाला है उसको अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट से डिस्काउंट कर दो, और हमारा परपेचुइटी फॉर्मूला निकल जाएगा. अगर हमारा ऑपरेशन कई सालों से है, देन वी यूज द ग्रोइंग परपेचुइटी फॉर्मूला, है ना. उसके बाद स्टेप 4 हमने जो निकाला, दैट इज कंपेयर. स्टेप 3 हमने अभी तक निकाला. उसके बाद स्टेप 4 है कि कंपेयर एंटरप्राइज वैल्यू वर्सेस मार्केट वैल्यूज. ओके. सो हमने ये जो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाला, ओके, दिस इज नथिंग बट द एंटरप्राइज वैल्यू. अब एंटरप्राइज वैल्यू से भी हमने नेट एंटरप्राइज वैल्यू को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? Sometimes enterprise values will be much more than the market value of equity. For example, if the enterprise value, अच्छा, so क्या है कि okay, एक second. Sometimes enterprise value will be much more than the market value of equity. For example, the enterprise value is 100, the company holds $40 of debt, and the equity value is only $60. This can go the other way, especially if the company holds a great deal of cash. In which case, the company's market value can be greater than its enterprise value. If you take a look at Apple in 2013 or 14, you will see that its market value was $500 billion, but it held more than $100 billion excess cash retained record for profit. It's a consequence of actual inflation value of your operational the market. To get the value of a company's equity from the enterprise value, you need to think about how much debt and cash there is. ओके. सो एंटरप्राइज वैल्यू हमने स्टेप 3 तक निकाला, और उसके बाद हमें एसेस करना है कि हमारे पास कितना डेब्ट है और कितना लाइक इक्विटी है, और उस हिसाब से हमें अपना जो है मार्केट वैल्यू एसेस करना पड़ेगा. ठीक है. उसके बाद फाइनल जो स्टेप आता है, दैट इज एनालाइज सिनेरियोस, एक्सपेक्टेड वैल्यूज एंड बिडिंग स्ट्रेटजीज. सो उसके बाद क्या होता है कि एक बार हम जब अपने मार्केट वैल्यू पे आ गए इतने सारे स्टेप्स को कैलकुलेट करने के बाद, उसके बाद हमें उसके साथ क्या करना है कि मतलब हमने जो मार्केट वैल्यू निकाला वो इट अराइव्ड एट आफ्टर ए सीरीज ऑफ कैलकुलेशंस, राइट. सो उसके बाद हमने क्या किया कि ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि जो हमने और इस
प्रोसेस के दौरान हमने कई सारे एजम्पशंस बनाए। अब कोई गारंटी नहीं है कि एक्चुअल में जो होगा वो दैट विल बी अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव एज्यूम्ड, राइट। सो इसके लिए हमें कई सारे सिनेरियोस को कंसिडर करना पड़ता है। फर्स्ट हम लेते हैं बेस्ट केस सिनेरियो कि बेस्ट केस सिनेरियो में हमारा मार्केट वैल्यू क्या होने वाला है। उसके बाद वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होने वाला है, और एन एवरेज केस में हमारा जो है कि क्या होने वाला है, राइट। सो बेस्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो और एवरेज केस सिनेरियो, ये तीनों चीजें कंसिडर करनी पड़ती है। उसके बाद हम उनको एक वेट देके फिर कैलकुलेट करते हैं कि एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू से एक्सपेक्टेड वैल्यू में कैसे आते हैं। कि लेट्स से हमारा 10% प्रोबेबिलिटी है बेस्ट केस सिनेरियो में पहुंचने का, 70% प्रोबेबिलिटी है बेस केस मतलब एवरेज केस में पहुंचने का, और 20% हमारा चांस है वर्स्ट केस सिनेरियो में पहुंचने का। सो इन तीनों चीजों को हम अप्रोप्रिएटली वेट करके $84 पे पहुंचते हैं। मतलब $100 को अगर हम वैल्यू करें तो लेट्स से हम $80 पे पहुंचते हैं। सो हम जब बिडिंग करेंगे किसी कंपनी के लिए, ओके, कि हम इस पर्टिकुलर कंपनी को इतना वैल्यू करते हैं या फिर हम इतना दे के खरीदना चाहते हैं, सो वी देन यूज दैट पर्टिकुलर अमाउंट which is basically nothing but the expected value, okay। और हम यूजुअली बिड करते हैं थोड़ा कम, लाइक 70-75 पे हम बिड करते हैं, लेकिन इट इज 84 which is our expected value is the maximum that we can offer, okay। मतलब यहाँ पे बोला है कि मैक्सिमम सपोज लेट से 120 तक जा सकता है, राइट। लेकिन 120 हम कभी भी ऑफर नहीं करेंगे, हम लोग 84 पे ऑफर करेंगे, बिकॉज इफ वी बिड 120 देन इट इज देयर इज अ ग्रेट possibility that we will lose on this deal, right? So now we are going to study some mistakes in valuation that people tend to make, right? While doing this process of valuation. So यहाँ पे क्या कहता है कि let's turn to the mistakes that often make this art ठीक है। सो कभी कभी ऐसा देखा जाता है ना कि एक्विजिशन करने के बाद, ओके, सो वैल्यूएशन क्यों करते हैं किसी कंपनी का बिफोर इट इज एक्वायर्ड बाय अनदर एंटिटी। अब कई बार देखा जाता है कि क्या होता है कि एक्विजिशन करने के बाद जो है स्टॉक्स उस कंपनी का रैपिडली गिर जाता है, ओके। एंड दिस इज वेयर इट द कंपनी विच एक्वायर्ड द एंटिटी अंडरगोस लॉस। सो ये इसलिए होता है क्योंकि बेचते वक्त जो है, जो बेचने वाली कंपनी है वो कुछ कारणों की वजह से ही बेचा होगा, जिसको वो मतलब एकदम पॉलिश करके, टिपिकली मतलब सेल्स में जैसा होता है कि आप शॉर्ट कमिंग्स को छुपाते हो और अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को बढ़ा चढ़ा के बेचते हो। सो ऐसे रीजंस की वजह से कई बार होता है कि मतलब एक्वायरिंग कंपनी हैव टू गो थ्रू अ लॉस। सो ये कॉमन कुछ वैल्यूएशन मिस्टेक्स है। पहला उनमें से है कि इग्नोरिंग इंसेंटिव। सो एक्वायरिंग करने के वक्त बिजनेस ओनर्स जो है कई बार इंसेंटिव्स काउंट करना भूल जाते हैं कि इतना सारा लंबा चौड़ा कैलकुलेशंस करने के बाद हमने जो फाइनली एक वैल्यू पे पहुंचा, हमने उसमें हमने ये नहीं जोड़ा कि ये लंबा चौड़ा सम जिसने किया उनको भी तो पैसे देने पड़ते हैं, ओके। एंड they they often charge hefty prices for that। और मर्जर एंड एक्विजिशन करने का काम कंपनी डायरेक्टली नहीं करती, ये काम होता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के द्वारा, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का दो काम है। पहला तो इशू ऑफ शेयर्स, दो मेन काम है एक्चुअली, इशू ऑफ शेयर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। सो ये पहला होता है इशू ऑफ शेयर, दूसरा मर्जर एंड एक्विजिशन। सो इन्वेस्टमेंट बैंक भी काफी हेफ्टी अमाउंट चार्ज करती है इस प्रोसेस के लिए। तो ये दो चार्जेस जो है कंपनी हमेशा मतलब ऑफन
कैलकुलेट करना भूल जाती है, जिसकी वजह से इसको बाद में जो है वैल्यूएशन के मतलब एक्विजिशन हो जाने के बाद अक्सर इसका असर देखने को मिलता है। दूसरा है एग्जैजरेटिंग सिनर्जीज एंड इग्नोरिंग इंटीग्रेशन कॉस्ट। तो सिनर्जी क्या होता है यार, लेट्स से हमने एक कंपनी को एक्वायर किया, मेरा एक एंटिटी है ए और मैंने दूसरे एंटिटी को एक्वायर किया बी। तो ऐसा भी हो सकता है कि एंटिटी बी जो है मेरे प्री एग्जिस्टिंग एंटिटी के साथ आसानी से अलाइन कर जाए उनका बिजनेस प्रोसेस, और हम दोनों जल्द से जल्द एक साथ मिलके हमारा जो है काम स्ट्रीमलाइन कर सके, और उसके लिए हमारा कॉस्ट जो है वो मिनिमम पड़े। ओके, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनर्जी। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ये प्रोसेस करने के लिए भी हमें मतलब एक्विजिशन तो हमने कर लिया एंटिटी बी को, लेकिन एंटिटी बी को हमारे ऑपरेशंस के साथ जोड़कर एक साथ हमारा जो आउटपुट है वो निकालने में काफी एक्सपेंसेस लग गए। सो दिस इज अनदर मिस्टेक, दिस इज जस्ट अनदर एक्स्ट्रा कॉस्ट विच is often forgotten to calculate during the acquisition. ओके, तीसरा जो है दैट इज अंडरस्टैंडिंग कैपिटल इंटेंसिटी। लेट से हमने बी को एक्वायर कर लिया, लेकिन बी पे फर्दर बहुत सारे खर्चे करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू effectively utilize its value. So oftentimes the calculators forget to take into account such capital intensity. Okay, so this is just another mistake that people commit while evaluating a business. Okay, so this is it for the chapter. In the next session, I will give some real life examples. Let's say यहाँ पे investing in spirit arrow system हो गया, या फिर यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए हम चैप्टर समरी पे आते हैं। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल I will provide you with a detailed note of the summary of this chapter, but for the time being, let's end this video here by summarizing the chapter. So valuation is central to finance and management. Some methods discussed like multiples are simply shortcut methods. Others like IRR can be useful but can go wrong. Fortunately, there is a gold standard discounted cash flow analysis that provides a way to understand the value of a business as the present value of all future cash flows. ओके, सो जैसा कि हमने पढ़ा कि वैल्यूएशन किसी भी फाइनेंस या फिर मैनेजमेंट के लिए सेंट्रल फंक्शन है, और कुछ मेथड्स जैसे कि मल्टीपल्स बेसिकली शॉर्टकट मेथड होता है वैल्यूएशन करने का, और कुछ जैसे कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में जैसे मेथड्स में बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है। हम किस्मत से हमारे पास एक गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है जो कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, जो कि एक अच्छा तरीका है। वो कैसे काम करता है कि सारे फ्यूचर कैश फ्लोज को आइडेंटिफाई करके उन्हें जो है as the present value of all future cash flows. The exercise of forecasting the returns through returns is us to one of the most important lessons of the chapter. Valuation is an art informed by science. There is some science involved, but fundamentally valuation is subjective and laden with judgment. We have to make sure that we don't make mistakes systematically and overestimating synergies or understanding the capital intensity of business. The final lesson about valuation is that if you really want to understand the business, do a valuation of it. Only by thinking about the future, the cash flows, the capital intensity of business, and the risk of the business, you can truly understand that business. So इसमें पहली बात तो क्या है कि वैल्यूएशन इज एन आर्ट इन्फॉर्म्ड बाय साइंस। वैल्यूएशन कोई डेफिनेटिव मेजर नहीं है, ठीक है, कई सारे एजम्पशंस बनाने पड़ते हैं जो कि फ्यूचर में गलत प्रूव हो सकते हैं, बट देन अगेन वी हैव टू डू वैल्यूएशन। ओके,
वी हैव टू मेक श्योर दैट वी डोंट मेक मिस्टेक्स। अच्छा, हाँ हाँ, और कुछ मिस्टेक्स भी हम मतलब वैल्यूएशन के वक्त लोग करते हैं, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि पहले तो वो लोग सिनर्जी को ओवर वैल्यू कर लेते हैं, या फिर सॉरी सिनर्जी को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, या फिर कैपिटल इंटेंसिटी को कंसिडर नहीं करते, या फिर वर्कर्स का जो इंसेंटिव है वो कैलकुलेट करना भूल जाते हैं। ओके, सो दीज आर द मिस्टेक्स दैट वी नीड टू अवॉइड ड्यूरिंग वैल्यूएशन। और यहाँ पे फाइनल एक बात बोला है कि हम अगर किसी बिजनेस को सच में समझना चाहते हैं तो हमें उसका वैल्यूएशन करके देखना चाहिए। ठीक है, ओनली बाय थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, द कैश फ्लोज, द कैपिटल इंटेंसिटी ऑफ द बिजनेस एंड द रिस्क ऑफ द बिजनेस कैन यू truly understand the business. Now that we have discussed value as a function of free cash flows and discount rates, there is one final question to tackle. What should companies do with all these free cash flows? How should they give it back to capital providers? Or should they invest in new things? How should they allocate all those free cash flows across the business and capital providers? Those questions are the top subjects of next chapter. So next chapter में हम लोग पढ़ेंगे कि यार हमने जो cash flows को calculate किया, फिर उनको कैसे कन्वर्ट करे टू प्रोवाइड रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स, राइट, और द कैपिटल प्रोवाइडर्स। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सो दिस इज इट फॉर दिस चैप्टर विच इज नेम्ड एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ वैल्यूएशन। हमने इस चैप्टर में कई सारी चीजें पढ़ी, और इस चैप्टर को का जो एक्सटेंडेड पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, विच इज अ सीरीज ऑफ एग्जांपल्स ऑन हाउ different companies did valuation. So thanks a lot for viewing. Thank you and have a nice day.